occasion of World Environment Day, Prime Minister Narendra Modi launched a campaign to encourage the citizens to plant trees. The Prime Minister planted a sapling at his 7 Racecourse Road residence. He was flanked by Environment Minister Prakash Javadekar. The Prime Minister has been urging people to make the environment clean and green. Earlier sportspersons, including star cricketers Virat Kohli and Olympic medalist Sushil Kumar, also participated in a sapling plantation drive launched by the government across the country. Environment Minister Javadekar flagged off a rally of electric scooters and hybrid cars at Delhi's India Gate, announcing a 30% subsidy for those who buy these vehicles. पेड़ लगाकर इस मुहिम का प्रारंभ किया है। अभी पर्यावरण भवन में दोनों प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली और सुशील कुमार दोनों के हाथों से हम पेड़ लगा रहे हैं और ये आगे सिलसिला बढ़ेगा। आज दोपहर में सचिन तेंदुलकर भी मुंबई में और अन्य खिलाड़ी भी वहां लगाएंगे। तो ये सारे देश भर में खिलाड़ियों की एक पहल है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी प्रतिबद्ध है। मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं आके पहला पेड़ लगा पाया और जैसे मंत्री साहब ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने हमारे कल लगाया है पेड़ और आज सचिन तेंदुलकर और बाकी खिलाड़ी भी लगाने वाले हैं आज के दिन और कल हम इंडियन टीम के साथ भी कुछ करेंगे। तो मुझे काफी खुशी है कि मुझे यहाँ पे मंत्री जी ने बुलाया और मुझे मौका दिया सुशील के साथ। On this Environment Day, Thiruvananthapuram city is both an example of how a city should be and how a city should not be. As you can see on my left side, there is a pile of garbage. People have packed garbage in a sack and have dumped it here. There are different forms of waste: industrial waste, domestic waste, food waste, medicines, thermocol, plastic. And the location that I'm standing right now is right behind the Secretariat. Ministers, IAS officers and other government officials pass through this way regularly. And once the actual monsoon shower sets in, this is going to cause deadly diseases. Now on the other side, you can see the roads in the city. Now these roads are well planned and there are several roads leading to one destination, which makes it easy for the vehicles to move around smoothly, and which makes the city different from other cities. And it is an example because the traffic congestion here is very, very low. It is very rarely that you see that people get stuck in a signal for more than 1 or 2 minutes, and that is precisely because the roads are designed in such a way to accommodate all the vehicles, the increasing number of vehicles and the population in the city, which is a good example for other cities in Kerala and other cities in the country as well. With camera person Jayakumar, Revati Rajivan in Thiruvananthapuram for India Today. Another alarming information posing risk to the capital has been red flagged by the Centre for Science and Environment. No one, including the Chief Minister of Delhi, can claim safety from the deadly ozone pollution. CSE claims that a significant ozone build-up that risks public health has been witnessed this summer in several areas of Delhi. The latest analysis found that the area where Arvind Kejriwal resides was highly vulnerable to deadly ozone pollution. It also mentioned that unacceptable pollution levels were found in Luton's Delhi and around several hospitals. CSE says that if unchecked and without a time-bound preventive action, this can deepen into a serious public health crisis. कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपने को पोल्यूशन कम करना है, दिल्ली को साफ करना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सारी दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो एनडीएमसी पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही है। कैसे काम करेगी मशीन? तो बोले जी अभी सफाई कर्मचारी पूरी झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू का जो कूड़ा उठता है, धूल उठती है, वो उनके अंदर भी जाती है, उनकी भी बीमारी फैलती है, उनके भी फेफड़ों में सारी धूल जाती है। अब उनको क्या करना है? पूरी झाड़ू नहीं लगानी बता रहे हैं, वो मोटा मोटा कूड़ा, बस पत्तियां, पॉलिथीन, ये सारे वो साइड कर देंगे और बाकी जो मिट्टी है वो मिट्टी है मशीन उठाया करेगी। लुटेंस दिल्ली में जो हम मात्रा आज देख रहे हैं, एम्स में जो आज मात्रा देख रहे हैं, सिविल लाइंस में जहां हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां पे जो मात्रा है आज, वो इतनी खतरनाक है कि उसका जो असर जन सेहत पे और हर के ऊपर, रिच एंड पावरफुल हर लोगों के ऊपर हो रहा है, वो बहुत ही खराब है और एक खतरनाक है। And on World Environment Day, we bring you another very worrying story. Deadly smoke and ashes from electricity production plants has risked the lives of residents in Sonbhadra district of the state of Uttar Pradesh.
Residents living in the area are suffering from chronic diseases. The matter has become so extreme that they actually cough out the ashes, and that's really, really disturbing. Residents of the area say that when rakes of trains that bring coal are empty, the entire area gets engulfed in dust. Relevant authorities have also been apprised of the situation, but there is no action yet, and the situation is getting worse with every passing day. The pollution is grievously harming the health of the residents of this area. डस्ट सर यहाँ के लोगों को जीने नहीं देगा। अगर लोग 80% यहाँ के पीड़ित हैं, टीबी से हो जा रहे हैं, तरह तरह के रोगों से हो जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है सर कि ये 24 आवर्स ऐसा कोई दिन नहीं होता हो, कोई घड़ी नहीं होती जिस वक्त इसका डस्ट न होता हो। यहाँ के लोगों को लैंकों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे जो रैक निकलता है कोयले का, जो ट्रेन आती है तो वैगन खाली होती है, तो वहाँ से जो डस्ट उड़ता है, कोयले के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो मतलब पूरे एकदम अंधेरे टाइप में कर देते हैं। उसका जो डस्ट होता है कोयले का उड़ के जैसे हवा के द्वारा हमारे नाक में एकदम मुंह के अंदर प्रवेश करता है, तो खांसी होती है बहुत बुरी, और खराश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और बीमार भी कई बार हो चुके हैं। And India Today, in partnership with Tata Steel, organized a conclave to celebrate World Environment Day in New Delhi earlier this week. Speaking at the Conserve to Preserve conclave, an event jointly organized by Tata Steel and India Today, the most pressing environment concerns were discussed. Nothing can be more relevant than today's topic of this conclave. I commend India Today's initiative to bring all those concerned together and churning and brainstorming on the ideas which will definitely give some more clues and ideas of our sustainable living. Environment and development go together. We have followed that whole principle. I would request Minister that Make in India can become Make Sustainably in India. Wildlife tourism has to, because it's such a limited carrying capacity, you have to think through what kind of segment are you going to attract, what kind of identity that destination would have, would there be overcrowding? If there is overcrowding, how would you handle that? And how will you handle your infrastructure so that it's a proper development? We have now reached a stage where we just can't afford to remain passive about the environment. We have to take action now and achieve growth, showing responsibility towards our planet.